everyone. In previous video we will discuss about the topic named Bitwise OR operator. Now in this video we will going to discuss about Bitwise XOR operator. Okay, let us see what is XOR operator. XOR operator basically XOR operator. XOR operator basically denoted by this sign, and how it will work? It will work simply like this. 2 नंबर का हमें इनपुट कराना है, तो इट विल वर्क AI इंटू AI प्लस BI मोड 2. AI plus BI mode 2. Let us see what is the example. Okay, now see, देखिए बाइनरी वैल्यू है मेरी 1 0 0 डबल ट्रिपल 1 0 0. इधर है मेरी बाइनरी वैल्यू 1 1 0 1 डबल 0. AI A1 A1 B A1 A2 A3 A4 डॉट 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 A B1 B2 B3 B4 डॉट डॉट डॉट. तो AI प्लस BI, AI वैल्यू इक्वल्स टू AI मीन्स A1 इक्वल्स टू 0 और B1 इक्वल्स टू 0. इट विल गिव 0 व्हेन एडिशन एंड मोड 2 इक्वल्स टू 0. ओके, तो वी विल प्रिंट 0. ऐसे ही 0 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 और मोड 2 इक्वल्स टू 1, तो इट विल गिव 1. ओके, लेट अस सी, सॉरी वन मिस्टेक. इट विल गिव 0 नॉट अ, क्योंकि वी विल गोइंग टू प्रिंट अ रिमाइंडर. मोड साइन इज यूज फॉर प्रिंटिंग अ रिमाइंडर. व्हाट? रिमाइंडर. So 1 plus 1 equals to 2 and 2 mod 2 equals to 0. So here we will print 0, है ना. Now 1 comma 0, तो 1 plus 0 equals to 1 and 1 mod 2 equals to 1. Now here we will get 1 and then 0 1 0 1 base 2 equals to 168. 168 base 10. Is that clear? I hope operator XOR operator is clear to you, है ना. The formula of XOR operator is this. So do this and you will make it all clear. Okay, so let us see the example of this. See, hashtag Bitwise XOR operator. ठीक है. A equals to what? 156. B equals to what? 52. Now what we want to do? We want to do print A XOR B. Okay, then what is the output? Output will be 168. Okay, simply what is XOR operator do? XOR operator do the work on simply on this formula. Formula is XOR operator का formula A XOR B AI into BI. Here I is equals to index value. Okay, ठीक. So I hope it will clear to you. We will meet you in next class.